सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632। Namaskar, good evening, and a very happy Diwali. This is Aranyaka Malik, a practicing counselor and a teacher from Bhubaneswar, welcoming you on this session. So, Sahyog is a live interactive session organized by NCERT, and as a part of it, MANODARPAN initiative is an initiative that provides psychosocial support for students' mental health and well-being. Sahyog sessions are held with practicing counselors to address the mental health and emotional well-being concerns of students, parents, and teachers. So today's topic for discussion is intervention to adolescent substance use. Before starting with the session, I would like to say to the viewers that if you have any questions, queries, or doubts, you can ask and contact us in the phone number and email ID that is being flashed in your screen. So when we talk about adolescent and their mental health, we can say that it is a critical aspect of overall well-being during a crucial developmental stage. So adolescents face unique challenges that can impact their mental health, including biological, social, and emotional changes. So as a part of adolescents' well-being, substance use is a problem that needs to be addressed and intervened. So to further discuss on this topic, we have Mr. Ketul Kumar from RI Bhubaneswar to light on some intervention strategies to deal with adolescent substance use. So we welcome Sir to discuss the strategies. Thank you so much, ma'am. So first of all, I would like to thank NCERT for this wonderful opportunity. So audience, today I'm going to talk about interventions to adolescent substance use. So first of all, we should know about what is substance abuse. So here, if you are using any psychoactive drugs like chemical, liquid, powder, or any performance enhancing drugs in excess amount, that is called substance abuse. It means कि अगर आप कोई भी psychoactive drugs क्या करते हो, एक्सेस अमाउंट में लेते हो, जस्ट लाइक आप कोई केमिकल लेते हो, लिक्विड लेते हो, पाउडर लेते हो, या फिर परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स लेते हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं. अब ये सब्सटेंस अब्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. अगर आप एक्सेस अमाउंट में कोकेन, marijuana, अल्कोहल, हेरोइन, निकोटीन या फिर एम्फेटामाइन यूज करते हो, जो आपको क्या करता है, लेटर फेज में, बाद में आपको नुकसान पहुंचाता है. किस फॉर्म में? ये आपको फिजिकली, शारीरिक रूप से, सेकंड आपको ये मेंटली, मानसिक रूप से, और आपको इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी आपको क्या कर सकता है, बाद में परेशान कर सकता है. ठीक है, चलो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, how we can deal with substance abuse during adolescence phase. So here I have created a question like, how does participation in a sports and physical activity which can influence the likelihood of substance use among adolescents? So here are the answers which I will deal one by one. So first one is structure and discipline. If we will talk about discipline, it means we have to talk about rules and regulation. Two aspects we have to cover, rules and regulations. Now, I will correlate with sports and physical activity.
सो व्यूअर्स, अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि मैं बता दूं, अगर आप यूथ है, अगर आप एक बच्चे हैं, टीन एज में हैं, तो ये उम्र ऐसा होता है बच्चों के अंदर सरप्लस एनर्जी बहुत होता है। अगर मैं उनके सरप्लस एनर्जी को अगर क्या करता हूं सही फॉर्म में या सही जगह पे चैनलाइज करता हूं, इट मीन्स कि उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करता हूं, तो उनका ध्यान किधर नहीं जाएगा, सब्सटेंस यूज करने पे नहीं जाएगा, वो उधर फोकस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेली क्या रहेंगे, वेल इंगेज रहेंगे। उसके लिए आपको क्या बनाना है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करना है, ताकि बच्चा स्पोर्ट्स में ही इंगेज रहे, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही ना हो सके। सेकंड वन इज पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस। पॉजिटिव पीयर इट मीन्स की योर सोशल ग्रुप। हर बच्चे का कोई ना कोई दोस्त होता है, अगर उसके दोस्त अपने फ्रेंड को पॉजिटिव सकारात्मक रूप से मोटिवेट करें, उसको गलत चीजों में ना इन्वॉल्व करें, उसको रोके, अगर वो इन्वॉल्व होना चाहता है, देन ऑल हैव टू से नो। आपको हमेशा रेडी रहना होगा, क्योंकि आप उसके दोस्त हैं, आप उसको मोटिवेट करेंगे, नहीं, उसको गलत चीज करने से रोकना है। थर्ड वन इज स्ट्रेस रिलीफ। देखिए, बच्चों को कभी कभी स्ट्रेस होता है, ये कॉमन सी बात है, और जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं। तो इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेस, स्पोर्ट्स क्या करता है, जब भी आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कि फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स, तो अगर बच्चे को क्या हो, स्ट्रेस हो, तो वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा, और ये एंडोर्फिन्स क्या करता है, उसको स्ट्रेस को कम करता है, मतलब उससे उसको छुटकारा देता है, इट मींस उससे सहायता प्रदान करता है और उसको कम करता है। ठीक है ना, चलो। फोर्थ इज इनहेंस सेल्फ स्टीम थ्रू अचीवमेंट। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, और वो अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहा है, इट मींस कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, ग्राउंड जा रहा है, उसका दिमाग गलत एक्टिविटी में नहीं है, और रेगुलर अगर वो अचीव करता है, लाइक अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर क्या आता है, एक जील आता है, उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट खेल लिया, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, स्टेट लेवल पे जाना चाहिए। हाँ, मैं स्टेट खेल लिया, अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, नेशनल लेवल पे जा सकता हूँ। फिर वहां भी अगर वो इन्वॉल्व हुआ, अच्छा कर गया, चलिए मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता हूँ, तो देखिए उसका सेल्फ स्टीम बढ़ रहा है थ्रू अचीवमेंट। वो अपने आप को दूसरी चीजों से, जो गलत रास्ता है, उससे अपने आप को दूर रख रहा है, इट मींस सब्सटेंस यूज से अपने आप को दूर रख रहा है, किसके माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से। फिफ्थ वन इज हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। देखिए, मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है, सबके लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस आता है, आपके साथ भी कोई ना कोई सेटबैक हुआ होगा, आपने कुछ खोया होगा, और इन द कंडीशन ऑफ चैलेंजेस, हर्डल्स, आपको क्या करना है, एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म यूज करना, और ये कहां से आएगा, स्पोर्ट्स के थ्रू, इंट्राम्यूरल के थ्रू, फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, प्रॉपर वर्कआउट के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू। और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म को आप कैसे कर सकते हो, जिसको आप मेंटल टफनेस बोलते हो ना, कैसे हम अपने आप को मेंटली टफ कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कंसंट्रेशन कर सकते हो, इसके अलावा गोल सेटिंग, इमेजिनरी टेक्निक, ये सब आपको क्या करेगा, सब्सटेंस यूज से और जो भी गलत एक्टिविटी है उससे आपको दूर करेगा। ठीक है ना, चलो। नाउ थर्ड वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्कूल। इसमें स्कूल क्या कर सकता है। देखिए, बच्चा ज्यादा समय आजकल फैमिली के पास ना होकर स्कूल में बिताता है, तो स्कूल की ये जिम्मेवारी होती है कि वो क्या करेगा, बच्चों के लिए एजुकेशनल और अवेयरनेस कैंपेन लगाएगा। तो देखिए, एजुकेशन आपको पता है ना, मोडिफिकेशन इन बिहेवियर। जब भी आप क्या करते हो, अपने आप को एजुकेटेड करते हो, तो आपके बिहेवियर में मोडिफिकेशन आता है, इट मीन्स कि आप गलत रास्ता से दूर हो, तो आप पढ़ने में बिजी हो। स्कूल को क्या करना है, बच्चों को पढ़ाने में बिजी रखना है, प्रॉपर उसका क्लास होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं ताकि बच्चा जागरूक हो, उसको पता चल सके कि ऑलवेज से नो टू ड्रग्स, नो टू सब्सटेंस यूज। सेकेंड वन इज काउंसलिंग सर्विसेज। स्कूल में काउंसलर होते हैं,
और काउंसलर इसको अच्छे से डील कर सकते हैं, बच्चे का जो परेशानी है वो समझ सकते हैं। बाकी इस पे लेटर बात करेंगे। जो हमारे पास मैम है वो भी एक रिनोड पर्सनालिटी है और काउंसलिंग की वेल गुड बोल सकते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर भी है, तो वो आपको बताएंगे अभी। थर्ड वन इज अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। अगर हम समय रहते ही बच्चे के बिहेवियर में अर्ली डिटेक्शन कैसे करना है, जब भी बच्चा कोई गलत एक्टिविटी करता है ना तो उसके बिहेवियर में चेंजेस दिखे और उस बिहेवियर को पकड़ना है। इसके अलावा उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस नोट डाउन करना। ऑब्वियसली बात है, जब गलत एक्टिविटी में है तो उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। तो आपको समय रहते ही उसको डिटेक्ट करना है, पकड़ना है और उससे डील करना है। फोर्थ वन इज सपोर्टिंग इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे सपोर्टिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? वो क्रिएट कर सकते हैं हम टीचर, पेरेंट्स और विद स्टूडेंट। अगर ये तीनों मिलके एक साथ काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सब्सटेंस यूज वाला जो प्रॉब्लम है ना, इससे बच्चों को दूर रख सकते हैं। इट डिपेंड्स स्कूल कि वहां के स्टाफ कैसे हैं, कैसा मेंटरशिप है, उसको कैसे गाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलो। एंड फिफ्थ वन इज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। देखिए, आपको स्ट्रिक्ट रूल बनाना होगा, स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी बनाना होगा और आपको ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा फ्री टाइम में क्या कर रहा है। ये स्कूल की जिम्मेवारी है। फ्री टाइम में कहीं या फिर क्लास बंक करके कहीं और तो नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे ऐसे ही करते हैं जब वो एडिक्टेड होते हैं या सब्सटेंस को यूज करते हैं, वो समय ढूंढते हैं। तो स्कूल को क्या करना है, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाना। इसके अलावा आप प्रोग्राम चला सकते हैं। और अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल की जिम्मेवारी होती है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा हो। इट मीन्स कि बच्चे के एक्टिविटी पे क्या करना है आपको नजर आए। ठीक है, सो दीज आर द चैलेंजेस, सॉरी, दीज आर द सॉल्यूशंस which school can implement for intervening in adolescent substance use. Clear? Chal, I hope clear. So, thank you so much from my side. एक अच्छा कोट मैंने डाला है, real strength shines in those who refuse to fall into the trap of substance use. So moving forward, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक वेल रिनोड पर्सनालिटी है। आप बोल सकते हैं कि एक काउंसलर है मैम और टीचर भी हैं, और उनको बहुत अच्छे से पता है एंड शी विल डेफिनेटली गाइड कि काउंसलिंग कैसे करना है बच्चों। सो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, sir, for highlighting the role of school and the physical activities, how in how we can deal with the adolescents using substances. So coming to adolescent substance use, when we talk about adolescence, it is mainly the age group between 10 to 19 years, like the ending of childhood phase and the like entering when they enter into a adulthood phase. So, counseling approaches can be highly effective interventions for substance use adolescents by addressing psychosocial, emotional, and social factors that contribute to substance use. So, we have different therapy techniques and strategies that, as counselors and mental health professionals, use. So, first, therapy, to just quote, I would like to say that cognitive behavior therapy is highly recommended. So, in cognitive behavioral therapy, what we do is we identify and change negative thoughts, thought patterns, and behaviors that are associated with substance use. So, it teaches coping skills and strategies to manage the triggers, and it can reduce the cravings and avoid high risk situations. Next can be motivational interviewing, that is a client centered approach that usually enhances the individual's motivation to change, which is very much important in intervention strategy. Next is family therapy, which we all know that how family gets involved in the recovery stages. Dialectical behavior therapy is a type of therapy in which
it teaches us how to manage and regulate our own emotions. Like we can say that when an adolescent is in that stage, they face a lot of emotions. So managing their own emotions can also reduce the use of substance use. Then we have a brief strategic family therapy, which mainly focuses on strengthening the family relationships. Then there is a 12 step program that usually is used to reduce the compulsions and addictions among the adolescents. Uh, as a part of psychoeducation, when we talk about psychoeducation, it is usually meant to provide information regarding the effects of substances. Like sir have already said, there are different kinds of substances that is being used, then the addiction, then the coping strategies, the awareness. So psychoeducation forms a very important part of counseling strategy. We have other specific strategies that we can include in the counseling process, like engaging the adolescent in a goal setting. If an individual have a particular goal, then he or she may not go into a path of using substance use. Using relatable language and examples in making them understand the risk of substance use and the effects and the impact of the substances they are using. Then addressing the co-occurring mental health issues if they have any other kind of mental problems. If they have, for example, if a child is going through depression, so avoiding depression, he or she may use substances. So we have to address the other kind of mental issues in order to check with the use of substances. Then fostering a non-judgmental and empathetic environment, which is very much important for every individual in this world. Then incorporating the online support groups, counseling sessions, which is very much important in this techniques. As a part of counseling strategies, we can use active listening, we can hear to them, we can use reflective summarization, we can use open-ending questions, like by asking them what is the problem, how we can deal with the problem, and problem solving skills training. And one of the most important is mindfulness exercises, which is very effective in dealing with substance use. So counseling approaches tailored to the individual's needs of adolescents can create a supportive environment for recovery. So when I say about environment means school environment, and it can be family environment. So talking about family environment, it includes the parents and caregivers who play a very critical role in the treatment of adolescent substance use. Their involvement can significantly influence the effectiveness of interventions and in the recovery journey. So first thing that they can provide is support and communication. Like, discussing the problems, their feelings, their experiences can, encourage them to build a trust and openness in the family environment. And by actively listening to their problems, being attentive, being sympathetic, and empathetic mostly helps adolescents to feel understood, and which can reduce the feeling of isolation. Like individuals and adolescents usually feel isolated in this stage, right? So, and the next can be education and awareness. Like if the parents can educate them about the signs, the risks, and the consequences of substance use, it can be recognized issues and can respond appropriately. Then, by demonstrating healthy coping mechanisms and lifestyle choices, a healthy lifestyle is very much important in order to deal with their emotional well being, and later it can reduce the risk of using substances. Then, by setting a clear expectations and establishing and reinforcing rules in the family, can help the adolescents to understand what are the consequences of their actions. That if they are into this path, what are the actual consequences, what they will be facing in future. And the next important part is their participation in the treatment. So when we say about the treatment process, involvement in the therapy can support very much in their recovery. Like actively participating in the treatment programs and support groups can enhance the adolescents'
commitment to the recovery. They can feel that, yes, my family is there with me. And by celebrating success and any kind of progress through the treatment can also motivate the adolescents and can act as a positive reinforcement in their treatment plan. And by encouraging them in many kind of healthy activities like helping them and motivating them to take part in sports, in hobbies, or any kind of community service can provide a constructive alternative to substance use. And most importantly, creating a supportive home environment, like minimizing the stress, reducing the conflict among the family members, and reducing the stress at home can also help create a more stable environment for recovery. And the last can be encouraging healthy relationships and supporting positive peer relationships can also provide adolescents with a healthier social network. So, counseling and the role of parents and caregivers can be a great intervention strategy for adolescent substance use. But before that, we should know that early intervention and awareness should be there. Like Sir have also quoted that early intervention can prevent the substance use from becoming a habit. So when we actually identify the individual or the adolescent is going into the behavior, is having any behavior change, or if we can identify and we can intervene early, then we can reduce the risk of the effects of the substance uses. And it also increases the success rates. As we all know, substance use can impact academic achievement, it can affect the emotional, social, and physical health of an individual. So early intervention fosters all these strategies in dealing with substance use adolescents. And awareness is very much important, which promotes understanding, and it also helps in reducing the stigma that is there in our society regarding the substance use. And it also helps in enhancing the help-seeking behavior among adolescents. For example, if there is no stigma in the society, then the individual can seek for help. So while concluding, I would like to say that parents and caregivers are essential partners in the treatment of adolescent substance use. And school also is a very much important aspect and part in the intervening process. So their involvement not only provides emotional and practical support, but also creates more conducive environment for recovery. So by participating actively in the treatment process can help foster resilience, accountability, and positive change. So addressing adolescent substance use requires a multifaceted approach that involves families, schools, and communities working together to provide support and resources. So this is it for today. I thank you, Ketul Kumar sir, for being there and for highlighting the intervening strategies to deal with adolescent substance use. I thank you all the viewers to that you have been patiently there listening to us. I thank you, sir. Thank you so much, ma'am, and thank you so much, NCRT, for this wonderful opportunity. And once again, everybody, happy Diwali. So signing off, happy Diwali to everyone. Thank you. Namaskar. Thank you. Namaskar. सोच में सकारात्मकता लाएं, जीवन को बेहतर। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। मनोदर्पण पर कॉल लगाएं, मनोबल अपना और बढ़ाएं। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। चलो आज ही प्रण ले हम, मानसिक स्वास्थ्य सुधारे हम। मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।